Shivansh Yadav. Third class, Shivansh Yadav. Class 4th, the first prize goes to Akshar Mishra. Akshar Mishra. Second prize goes to Rudransh. Third prize goes to Muhammad Ayan. Okay. From class 5th, the first prize goes to Asta Jaiswal. The first prize goes to Asta Jaiswal. The second prize goes to Pragya. Pragya. The third prize goes to Anushri Tripathi. From class 6th, the first prize goes to Akshat Mishra. Akshat. Clap and welcome. Encourage enough. The second prize goes to Sijal Chauhan. The second prize goes to Sijal Chauhan. Third prize goes to Shivansh Mishra. Shivansh Mishra. From class 7, the first prize goes to Prakhar Singh. Prakhar Singh. Second prize goes to Ayush Prabhagar. The third prize goes to Abhay Sharma. Third prize goes to Abhay Sharma. Class 8. The first prize goes to Sahil Ansari. The first prize goes to Sahil Ansari. The second prize goes to Shaurya. Shaurya. The third prize goes to Aradhya Jaiswal. Aradhya Jaiswal. From class 9, the first prize goes to Shreyansh Yadav. Class 9, Shreyansh Yadav. Second prize goes to Shivam Tiwari. Third prize goes to Kajal Pathak. Kajal Pathak. Class 10, the first prize goes to Utkarsh Babu. Second prize goes to Sumit Dubey. Sumit Dubey. The third prize goes to Yatharth Shukla. Yatharth Shukla, third prize. These are the children who have done their exams well. I appreciate all the participants. So we are learners. So आज नहीं कल आपको मिलेगा. कोशिश करते रहना, निरंतर परिश्रम, कठिन प्रयत्न करते रहना, आगे आपका जीवन सफल हो जाएगा. So I invite the founder of our school to award the children with the medals. Thank you, Professor साहब. जिन बच्चों को पुरस्कार मिला है उनको मैं पुरस्कार दे रहा हूं, लेकिन सभी बच्चों को पुरस्कार मिलेगा 23 जनवरी को. 23 जनवरी जानते हो तुम लोग, तुम्हारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव मनाया जाता है और बहुत लार्ज स्केल पर मनाया जाता है. सुबह से लेकर शाम तक कार्यक्रम होगा लार्ज स्केल पर, और शाम को तुम लोग भोजन करने के बाद, यहाँ प्रसाद लेने के बाद ही तुम लोग सब घर जाओगे. ये कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर लो. पढ़ाई लिखाई के साथ ये भी कार्यक्रम होना बहुत जरूरी होता है. धन्यवाद. फर्स्ट प्राइज बच्चे आ जाते हैं, आते रहें. फर्स्ट प्राइज नहीं, बच्चे जानते हैं फर्स्ट प्राइज वाले. फर्स्ट प्राइज को फर्स्ट प्राइज. Clap your hands and enjoy that.
second prizes. Now encourage. एक चीज तुम लोगों को और बताना चाहता हूं मैं। हमारे भारत में सनातन में पैर छूने के परंपरा है। तो तुम लोग सोचते हो हम पैर छूने में कुछ लोग संकोच करते हैं। पैर छूने में हमेशा आपसे जो श्रेष्ठ हो, आचरण में, विद्वता में, ज्ञान में, शिक्षा में, उसका पैर छूना बहुत पुण्य है। तुम लोग जानते हो ऊर्जा जो है, पॉजिटिव ऊर्जा जो है नेगेटिव ऊर्जा तरफ भागती है, जानते हो ना। जब हम किसी का पैर छूते हैं तो जो आदमी सार्थक चीजों को संचित किया है, जो पुण्य को अर्जित किया है, जो ज्ञान को अर्जित किया है, उसकी ऊर्जा हमारे पास आती है। इसमें माता पिता की तुलना मत करना। माता पिता अगर नहीं पढ़े लिखे तब भी तुम्हारे देवता तुल्य हैं, भगवान के तुल्य हैं। तो इसलिए तुम कभी भी किसी संत, महात्मा, गुरु, विद्वान, उसका जब पैर छू तो बहुत श्रद्धा के साथ दोनों हाथ को यूं करके यूं, उसकी ऊर्जा जो होगी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। तो साइंटिफिकली जानते हो। तो इसलिए तुमको ये बता रहा हूं कि पैर छूना सीखो और श्रद्धा से छूना सीखो, उसका तुमको बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद। So, my dear children, एक दो हफ्ते पहले there was a competition of science innovation competition conducted in the brain seed international school पे हमारे बच्चे भी गए थे उधर। So overall हमारे स्कूल का बच्चे को मिला है सेकंड प्राइज। तो हमारा स्कूल के लिए कैश अवार्ड मिला था 5,000 रुपया। ये 5,000 रुपया से नहीं, हम लोग हर क्षेत्र में हमारा स्कूल का नाम अभी रोशन हो रहा है आपके वजह से, बच्चों की वजह से। कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी डांस हो, कोई भी ड्राइंग हो, कोई भी साइंटिफिक इनोवेशन हो। अभी वो लोग पूछ रहे हैं कहाँ पे है MGEC स्कूल, महारानी गीता देवी स्कूल कहाँ पे है, कौन सा इलाके पे है। तो हम लोग आगे 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 सब जगह पे हमारा नाम, हमारा स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। आपका योगदान है, हमारा मैनेजमेंट का सहयोग है, हम लोग एकदम आगे बढ़ रहे हैं। So I appreciate the management for encouraging the children and the teachers for doing something innovative in our school. So आगे हमारा स्कूल एकदम one day top बनेगा। So ईश्वर का आशीष
लगातार बढ़ते रहेगा आपका सहयोग से। तो ऑलवेज वी आर हियर, हम लोग सब जगह पे, नॉट ओनली पढ़ाई, नॉट ओनली खेल कूद, इवन द साइंटिफिक इनोवेशन, ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग, स्पीच कंपटीशन, सब प्रोग्राम हमारे स्कूल में हो रहा है। तो आप लोग कभी आपको मौका मिलता है, अवसर मिलता है, उसमें भागने के लिए, ज्वाइन करने के लिए आप लोग कोशिश करना। सो अवसर आपको लगातार हम लोग दे रहे हैं, सो इसको कैसे आप लोग उपयोग करना वो भी आप सीखना। अब इतने बच्चे हैं, कम से कम 350 बच्चे एग्जाम दिए थे, तो इतने लोग क्वालिफाई हो चुके हैं। डोंट थिंक दैट आप लोग कमजोर है, नो, कहाँ पे आपका कमजोरी है उसी से आप लड़ना। सो आगे आपका भविष्य अच्छा होगा, इसलिए हम लोग टीचर्स से, स्कूल मैनेजमेंट हम लोग साथ आपको देते हैं। सो ऑलवेज यूज इट, द अपॉर्चुनिटीज, and become a beautiful children of MGEC. Okay, so wish you all the best of the day. I thank the founder of our school for spending out his time, valuable time here, and appreciating and giving his messages. And लगातार हम लोग कोशिश करते हैं, साथ आते रहेंगे। सो बच्चे को अंदर भी एक ऊर्जा होता है ना, कभी हम लोग बहुत बड़े लोगों को मिलते हैं, उसका एनर्जी इज राइट, बट Sir was telling is right. The way, this whole good character, good qualities that we should develop, आगे आगे आपका भविष्य एकदम सुंदर हो जाएगा। जय माता दी, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि सबको पता ही है, पहले ही मैंने बताया था कि कुछ न कुछ तो मिलेगा ही, मेहनत अपनी तरफ से करते रहना। बाकी सर बताए हैं, मैनेजर सर यहाँ आए, मैनेजर सर को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ओवरऑल बचा है, इसमें अभी बच्चे आएंगे, कुछ बच्चे एब्सेंट भी हैं। अंश मिश्रा क्लास थर्ड, जो कि ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन है, क्लास थर्ड से है, ये बहुत खुशी की बात है। उसके बाद सेकेंड पोजीशन क्लास 5 से आस्था जायसवाल, जो कि अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन पर भी है। और क्लास 8 से थर्ड पोजीशन साहिल अंसारी, और क्लास में भी फर्स्ट पोजीशन है। इन सब के लिए बधाई, थैंक यू। Clap your hands.